Best song in the Yeah. world. Thank you, Jane. Thank you. Okay. Is there any certain topic you want to talk about? गो भाई, तुम जो जहाँ बोलो मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, I don't know you personally. Yeah. So मेरे लिए तो सब चीज़ नहीं. Right. But मुझे where do चीज़ें you नहीं want पता. the conversation to flow? Tell me that. Okay, introduce yourself. Like Karma. Is it your real name? Yeah. Karma. It's maximum my real name, समझ लो. Huh. Yeah, yeah. What's your real name? Like the certificate name? वो तो नहीं बता सकता मैं. Really? Yeah. Like on camera या cut कर देंगे? नहीं, it's just when I came to Bangalore around Yeah. like 3-4 years ago, right? तो उस तब से ही मेरा नाम कर्मा है. Actually, before coming to Bangalore also for 2 years, so I've just been Karma, and it's just better because it is a part of my name, and I just go by that now. It's just way better. Oh, so stage name था आपके, like समझ set सकते हो, name. समझ सकते हो. Okay. So before Bangalore, what Yep. was your life like? How was your life? I So think I, you are an engineer. I am an electronics engineer. पूरा. Electronics, electronics to media. Okay, we'll cover that journey. Yes. Okay. तो क्या हुआ था scene? I come from Lucknow, right? Nawab. So yeah, exactly. I was born in Varanasi, then I moved to Lucknow, and then I was living there for quite a while, and I did my engineering from there. I pursued electronics engineering. Yeah. Because after my 12th, I didn't know what to do, as most people, and then it was started from there. And in my college years, I had COVID hit. Okay. Okay. Yeah. Same. We are on the same ship. Yeah, because what will you do when everything is closed, right? So I was just working out mostly and just learning skills, right? So I got into writing. So I did a lot of internships then. तो मैंने कुछ writing की internships करी, कुछ editing की internships करी, and then I got into media and everything. That's mostly the journey. वैसे तो जो भी मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं वो सबने इधर उधर से ही आते हैं bro, वो इधर genuinely. उधर से आते हैं, लाइक कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट, ये मतलब ये 3 पिलर्स हैं. Yeah. इनको ही पकड़ के कोई ना कोई मीडिया में आ जाता है, लाइक वीडियो एडिटिंग आल्सो. Because that's हर चीज़ क्या होती है, everything is design, right? So design theory is design thinking is from point A to point B was the shortest distance. If you have to communicate something from here to Yeah. here, सबसे छोटे में कैसे communicate कर सकते हो? And that's what I had to learn because before what I do right now, before that I was for 2.5 years I was in a design agency. I was the head of creative. So I would look basically क्या होता था वहाँ पे, we would do websites. So I started out by writing websites in that agency. Okay. So I was writing social media, I was writing websites, and I have written over 200 websites. ठीक है. And then I got into that, and फिर उसके बाद scripts for ads, and that's how you get into media, right? Writing was my base for everything. Okay, so you started in your college only. Yeah. Which year? Second-ish. Second-ish. So yeah, second में था तब then COVID hit. मैंने भी अपने सेकेंड ईयर में शुरू कर दिया था, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब कोविड आया एंड कॉलेज ने बोला Yeah. चलो घर पे बैठो, हो Yeah, गया. वो नहीं कर सकते bro कुछ genuinely, like COVID was just a weird time because I was lucky enough that I was just away from a lot of disease, ठीक है? Because I was in my home, मैं अपने घर पे बैठा रहता था and my parents were whatever they were doing, और I would get food and घर पे रहता था. I was just lucky. कुछ मेरे आसपास there was a lot of calamity happening, but in my house it was pretty good, and I just sailed through COVID pretty victoriously, I would say, because I didn't lose anything. I just gained a lot. लाइक मेरी फैमिली में भी किसी को कोविड नहीं हुआ. Yeah. Everyone was fine. Okay. So how did you land in Bangalore? Yeah, ask me nice question. Like, would you rather watch your parents? No. Yeah. मैं स्टार्टिंग में कैंसर हो जाऊँ. सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ भी दूँ ना तो Yeah. किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, Genuinely, because you. बिकॉज आई डोंट हैव नंबर्स, Yeah. रिस्पेक्टफुली. तो फर्क नहीं पड़ता जब तक जो आप पे केस कर रहा है उसके लिए स्टेक्स हाई ना हो. Right. If they can like topple you, then they'll do it. Like मजा है तुम्हें गिराने में. वही Right. कि एक ट्रेंड पूरे, मतलब तुम एक ट्रेंड बन जाओ Yeah. कि Everyone's talking about you. everyone is talking about you, everyone is taking your clips, putting in their videos. तो मे बी उससे It just genuinely feels so unnecessary. The whole going down that route कि भाई शो बंद करवाना and all that is just weird. मतलब मैं
एकदम फेवर में भी नहीं हूँ उस चीज़ के और एकदम डिनायल में भी नहीं हूँ उस चीज़ के, बट उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए। Yeah, exactly, right. ठीक है, अब सोशल मीडिया किसी इन्फ्लुएंसर पे इतना टाइम वेस्ट करना, इतने रिसोर्सेज लगाना, आई डोंट थिंक दैट इज बेनिफिशियल इन एनी गिवन सेट। Yeah, it just does not make sense because there are real issues to solve, right? And I am just saying it as a guy who does not follow politics at all. It just became such a huge thing that मेरी feed पे आने लगा. That's I do not watch the news. That's how I get to know about things. मेरी feed पे कोई चीज़ आने लगी. That it has become such a huge thing, right? या That's what. But answering your question, कि या बैंगलोर कैसे आए? तो I was working from home in this design agency as their lead content writer, right? Yes, I was working with them, and I was the lead content writer. उसके बाद I got into. They just told me I was going to go for an MBA. Okay. ठीक है, I was going to go for an MBA. I had pretty good CAT score. How much? I had a decent percentile, like 96ish percentile आ गया था मेरे. अच्छी है. Yeah. Very nice. But I was gonna go there, but then I talked to this friend of mine. He was like, "It's better if you gain more work experience." And I was also like, studying is just. I believe a lot in self-education, where I don't think I'm being taught the right way in most schools and colleges. कि मतलब मेरे को जैसे सीखना चाहिए, right? I don't get that. So I have whatever I have learned, be it writing, be it creation, content creation, editing, direction, वगैरह, I have learned from the people around me and on my own, right? That's how I believe. So that was a major decision that I took to not do an MBA, and the major reason for that was that I believe a lot in self-education, that people can really change the trajectories of their lives with self-education, just learning. And great advice from that friend. Yeah, because especially in college, right? Because I'll tell you my story, okay? Yeah. So after my BCA, I did my BCA. So I was from a tech background, but I was working as an intern in the incubation cell of my college. So there, one of my teacher who was teaching MBA, so he told me कि यार MBA was not meant to be done straight after your bachelor's. कि यार MBA जो course बना था, it was like a management level course. If you want to go higher up in the hierarchy, Right. then लोग आते थे management करने जिन पे 5-6 साल का experience होता था. अब जब जो trend बना कि भाई MBA के बाद jobs अच्छी लग रही है, तो everyone just after the bachelor's MBA करने आ गए. Right. And बहुत courses बेचे. बोल रहे थे MBA में हमने बहुत बेचा. बट अब जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे मैनेजमेंट वगैरह, उनको पता भी नहीं था कि मैनेजमेंट होता क्या है, बिकॉज उन पे एक्सपीरियंस नहीं है. Right. सो आई थिंक या वर्क एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छा एक Yeah, also it's just like वे है. बहुत भेड़चाल थी ब्रो उस समय भी, because I got into engineering because of भेड़चाल. उसके बाद MBA भी जा रहा था because like अब क्या engineering कर ले, अब क्या करोगे, like just do a fucking MBA or something, right? तो उसी समय I was gonna go for it, exam भी हो गया था whatever, but then I just did. I came to Bangalore. I started working from here. I did a lot of social media here. फिर content creation से start किया, got into started acting, started directing and everything. That's धीरे धीरे सब. Yeah, धीरे धीरे. It was I came here in my third or final year के बीच में. ठीक है, मैं कॉलेज छोड़ के ही आ गया था, समझ लो. Yeah, I had a conversation with my fucking HOD. मैं बोला भाई देखो मेरा ऐसा सीन है, I want to go to Bangalore. I'm working anyway. COVID भी चल रहा था, classes were not regular, right? तो I told him that. He's like देख लो हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, तुम्हें अटेंडेंस करनी पड़ेगी, मैं नहीं जाने दे रहा तुम्हें and all that. Just I fucked my college. Like, fuck it, we ball. Yeah, fuck it, we ball हो गया bro. All in. Then just came to Bangalore. देखा जाएगा जब attendance हो गया. I went back to give my exams. Still haven't picked up the degree. ठीक है, तो अभी वैसा ही है. वैसे तो मैंने भी अपनी मार्कशीट नहीं उठाई है. Yeah, भाई यही होता है भाई. I just know इंटरनेट पे चेक किया, ठीक है, पास हो गए हैं. Because I have not used my mark sheet also at all. Yeah, this was a कल्चरल शॉक बोल सकते हो उस चीज़ को कि मैं जब बैंगलोर आया था, हर्ष ने मुझे बैंगलोर बुलाया. ही यूज्ड टू टेल मी कि आज तक उससे किसी ने डिग्री नहीं मांगी. वो जितना भी काम करता है, ही हैज शॉट विद सम बिग कंपनीज. ऑफ कोर्स. उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ऐसा था, मैं देहरादून में था, लाइक क्लोज सोसाइटी, नॉट गुड एज लाइक टियर 1 सिटीज एंड ऑल, जहाँ पर स्टार्टअप कल्चर भी नहीं है. तो उस टाइम पे जो वहाँ पे एक बबल बन के रहता था कि
डिग्री इंपॉर्टेंट है, कोर्सेज सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, बाहर जाओगे कैसे पता लगेगा. Yeah, job नहीं देन देगा जब तो मैं right. बैंगलोर आया तब पता लगा कि ब्रो एजुकेशन मैटर नहीं करता, इट्स योर पोर्टफोलियो दैट स्पीक्स फॉर यू. I think education matters. The thing, the degree does not matter. Yeah, the degree does Yeah. not matter. Self education matters. Yeah. Because also the industry that we are working in, right, is a very visual medium. It's always कोई तुम्हारी degree नहीं देगा, it'll be like तुमने बनाया क्या है, तुम अच्छा काम करते हो, आ जाओ. Yeah, and specifically for like people who are into creating things, even someone who's a coder, if he's a great coder, I don't think people will ask for his degree, right? अब मुझे नहीं पता like tech industry में कैसा काम होता है, जितना मेरे दोस्त बताते हैं. If you're genuinely a good coder and can build shit fast and at scale, then people will call you, and it does not matter really, genuinely. जो आपने बोला था ना कि सेल्फ एजुकेशन वाली चीज़, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट, आई गिव यू अ वेरी ग्रेट एग्जांपल. जब जो सेल्फ एजुकेशन के अराउंड ही है, जब मुझे यहाँ काम करते हुए लाइक 4-5 मंथ्स, जस्ट 4-5 मंथ्स, What were you working as? सिर्फ विजुअल डिज़ाइन और जो मेरा एक्सपीरियंस था कंसल्टिंग वगैरह का, like I used to consult students who came up with an idea. ठीक है, I used to tell them okay MVP ऐसा होता है, market research ऐसी होती है. Then I used to prepare them for the like the manager interview, the interview with the manager. तो जब मैंने कोई कोर्स उठाया यहाँ पे like मेटा का सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड देयर वाज दिस कोर्स ऑन डिजाइन थिंकिंग ओनली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी. उस कोर्स की जो जितना सारा कंटेंट था वो मुझे पहले से आता था, एंड इट्स लाइक अनकॉन्शियसली यू आर जस्ट पिकिंग अप थिंग्स दैट यू आर लर्निंग ऑन द वे. कोई कोर्स जब आप कोई कोर्स करने बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि ये तो मुझे चीज़ पहले से आती है. लाइफ taught me these lessons. So yeah, self education is very important. Self education also on the go. Yes. Like don't sit down, leave all your work and study. Just काम भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो, like books पढ़ते रहो. There are many great writers on like self help and business. नहीं, I generally feel that because क्या होता है कि even right now also I have not stopped learning. I think मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ. You will be it philosophy or psychology, whatever time I get, and I do not get the most amount of time. But whatever time I get, even before sleeping, I'll just read something, right? कुछ ना कुछ non-fiction में, fiction के लिए अलग time रहता है, non-fiction because I love to watch a lot of movies. Yeah. Right. That is one of. But coming to self-education, it's the best way to go about self-education is do whatever course you're doing, जो भी तुम कर रहे हो या जहाँ से भी सीख रहे हो, plus build a project with it साथ में, where you're implementing that, right? So I can pick up softwares very quickly, right? And the best way to get to know a software is कि make something run into a problem. YouTube पे जाओ, देखो कैसे fix होता है, and then just fix that, right? And then you learn more and more. That is the best way to go about it. Just course देखना is again, it's just that फिर तुम class देख रहे हो. That is not the way to go about it. It's working on a project which you want to put out to the world or you don't want to put out to the world. That's your choice. But that's the best way to go about self-education. What's your favorite movie? Favorite movie? Give me a genre. Like I'll explain. Like I'll elaborate more. What's your favorite movie जिसको देखने का ऐसा लगा कि यार ऐसी मूवी मुझे भी बनानी है? I don't think मुझे कभी ऐसा लगा कि मेरे कोई मूवी बनानी है. Right? I'm more of an ads guy. Although I have written a short film very recently, जो with a friend of mine, और हम लोग we're gonna produce it very soon. हम लोग खुद से ही produce करके पूरी short film बना रहे हैं. Great. Right? We're gonna send it to festivals and everything. But movie, I think the movie that has had the most impact on me would be Whiplash. Yes. It's the drummer. Yeah, for which Simmons got the Oscar. Yeah, it's a great fucking movie, and I really like that movie. I was watching it like 10 days back also. Okay, he was just such a great film, and to just imagine it was Damien Chazelle's directorial debut. That was his first film, full-length feature film, and he did that. It was just great. It's just great, great story, great character work. That's why it's my favorite, and it means a lot to me because there is a scene in Whiplash, right, where he's just drumming constantly. ठीक है, और फिर उसके हाथ से खून निकल रहा है. Bleeding also. Yeah, and just putting his wrist into the bucket of ice, and you see that where he's heading and what it means to him to do that and why he's doing that, and that just means a lot because
I would consider myself as a very ambitious person. I want to do more and more every day. I try to push myself more and more every day, and that just movie, it just got to me. Well said. Okay, so आपने बोला you are an ads guy. Okay, so there is this thing कि पहले ads बहुत अच्छे आते थे. Like कंपनीज बहुत एफर्ट्स पुट करती थी एक ऐड बनाने में, क्योंकि टीवी वाज द ओनली मीडियम बैक देन. तो टीवी पे टू हैव योर कंपनीज ऐड, ठीक है, उसके पहले तो बहुत मेहनत लगती थी कि भाई वो ऐड टीवी पे आ जाए. ठीक है, अब आपका स्पॉट रिजर्व हो गया है, देन नाउ यू हैव टू शूट द ऐड कि भाई ऐड क्या बनाए कि मासेस को अपीलिंग लगे एंड यू नो फनी हो, लोग रिमेंबर फनी करें, हो, इमोशनल कनेक्ट बने, लोग याद हमारी रखें, सेल्स बढ़े, बात एट द रखें. एंड प्रोडक्ट बिकना चाहिए, प्रोडक्ट अवेयरनेस फैलनी चाहिए. ठीक है, लाइक देयर आर ग्रेट एग्जांपल्स. नाइकी का ऐड हो गया, ठीक है, पहले इंडिया में भी ब्रो जस्ट द फेविकॉल ऐड हो गया, great ads. अप्सरा नटराज पूरा जो उनकी बीफ रहती थी, Yeah. ठीक है, ये सब एड्स हो गए. नाउ आफ्टर सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम बन गया है, लाइक एवरीवन इज फॉलोइंग अ ट्रेंड. लाइक पानी फेंकने वाला जो ट्रेंड बन गया था एक, Yes. उसके बाद they'll hook you with a meme template and then कोई they'll गिर रहा है, पड़ रहा है. yeah, I then fucking hate that shit. Genuinely. so what are your takes on these, what are your takes on the market shift कि you know from creativity and now to just following the trend कि किसी ने तो ट्रेंड बनाया and most of these trends are being set by western countries, European countries. like sidemen की कितनी कॉपी कर रहे हैं आजकल यूट्यूबर्स, but not talking about them, just the ad thing, advertisement, Indian advertisement. I genuinely feel where what happens is किसी भी इंडस्ट्री में फॉर सम रीजन होता है, फिर क्या होता है ना कि एक कहीं पे मोनोपोली होती है, ठीक है, एड्स बनने की, कि I'll come to that कि why I think that is also a good idea कि वो ट्रेंड्स को फॉलो करना whatever. बट क्या होता है कि एक मोनोपोली होती है एक बंदे के पास. इट वाज सच अ ह्यूज बैरियर टू गेट योर फर्स्ट, तुम अपनी टीवी एड फिल्म बनाना, ठीक है, कितना ह्यूज बैरियर है, ठीक है, तुम्हें बनाना वो चीज़. अब क्या हो रहा है, देन आफ्टर सम टाइम एज a medium comes like meta, as a medium comes like something, it gets democratized. ठीक है, पहले सेम विद कैमरा, राइट, कैमरा लेना, कैमरे से वीडियो शूट करना कितनी बड़ी बात थी. अब आईफोन पे मूवी शूट हो रही है, like 28 years later. Music video also na of Weekend. Yeah, I think so. That was also shot on the iPhone, right? But so that's what it is, right? क्योंकि पहले एक मोनोपोली होती है, फिर वो डेमोक्रेटाइज होती है, बट देन इट ऑल्सो रन्स टू द ग्राउंड. ठीक है, क्योंकि लोग की इट्स ऑल अबाउट लाइक क्रिएटिविटी. आई वुड से देयर आर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्टिकल एड्स. मैं उसको वर्टिकल एड्स बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी डू, कि मज़ेदार होकर कुछ नया कॉन्सेप्ट सोचा है, ठीक है, कुछ भाई हो रहा है, किसी बंदे ने किया कि ठक ठक कैमरे पे करेगी वो, ठीक है, किसी लड़की ने, या फिर कोई बंदा ऐसे वो बम लगा के रख देगा साइड में, राइट. वी यूज दैट, राइट, हैज वर्कड वेरी वेल. आई थिंक द पर्पस हैज शिफ्टेड विद टीवी एड्स. इट्स मोस्टली की ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है, बेस तो तुम रहे हो, चलो ठीक है, बट इट्स मोस्टली ब्रांड बिल्डिंग. बट उसके बाद क्या होता है विद मेटा कमिंग इन की पीपल वेंट ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स. तुम फेसबुक यूज़ करो, इंस्टाग्राम यूज़ करो, राइट, मेटा कैन शो यू एड्स, एंड व्हाट दे पीपल रियलाइज वाज कि ठीक है, हमें इनको क्या दिखा सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, एंड दैट्स हाउ इट गॉट डेमोक्रेटाइज, एंड देन द होल थिंग्स हैपन. एंड आई वुड से फॉलोइंग ट्रेंड्स तो इज फक दैट शिट एनीवे, बट जो चीज़ होती है कि लोग गिर रहा है, पानी पड़ रहा है, एंड ऑल दैट, ठीक है, दैट्स अ वे ऑफ डूइंग इट, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स दैट कैन बी डन. ठीक है, I made a couple of ads with the Bold Care and even Score. Great hooks, like उसमें there was creativity. There was no like कि भाई बस ये गिर रहा है, ये बंदा ये हो रहा है, and all that, right? So there is still creativity to be explored there, and I like those ads. Like even the ones that I showed you, अभी वो मेटा पे. I believe good ads are like बहुत जो obvious चीजें जो होती है ना, like good ads are things जो obvious नहीं हो रहे हैं. जैसे मूवी में बहुत सारे सीन्स होते हैं कि लोगों को पता है obvious कि भाई ये चीज के बारे में बात हो रही है, इट विल रिलेट टू दिस थिंग. इट्स सबटेक्सुअल, दैट्स द वर्ड, कि कुछ चल रहा है, सबटेक्स्ट कुछ और है, राइट, दैट्स व्हाट इट इज अबाउट. सो यू वर वर्किंग विद दिस एजेंसी इन बैंगलोर, ओके, सो व्हाइल योर दिस टेन्योर इन दैट एजेंसी, लाइक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा था व्हिच यू वर्कड ऑन? It was a nutrition brand that we had launched from scratch. तो हमने उसकी ब्रांडिंग करी थी, and तो it was basically a new method of delivery
जो अभी काफ़ी वेलबींग ने उसने क्यों निकल जा रहा है, बट अभी वेलबींग के भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, राइट, बट इट वाज अ न्यू मेथड डिलीवरी, वाज जस्ट अ स्लिप एंड यू पुट ऑन योर टंग, इट वुड डिसॉल्व एंड यू गेट Oh, ऑल द got it. न्यूट्रिशन, राइट. तो द फर्स्ट 4 products वर आई थिंक एक द कूलेस्ट वन वाज हैंगओवर रिलीफ, right? So you would take that before drinking, and then you would have no hangover the next day. So that was one of the coolest products because we did the design, the website, and then that was actually my first ad that we made. Oh. That was very special to me because the friend of mine is on my short film Vicky, right? His name is Divyansh Dubey. So he's a full-blown like director. He works in Mumbai, and so he wrote those ads together. We shot them, right? Well, that was my first ad where I was acting as well. So we did that. It was pretty cool, and it got quite a lot of views, and we were sold out with the products in 3 months because of those ads, right? The way the vertical ads worked then, and then, I forgot to ask you this question कि किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार मीडिया इंडस्ट्री इज मेंट फॉर मी, कि आई कैन मेक अ चेंज इन दिस इंडस्ट्री, या दिस इंडस्ट्री इज मेंट फॉर मी. व्हाट वाज दैट पॉइंट? I don't think there was a point as such. It was just very कभी भी there's no point कि मैं इसी event में ही होता है. It's always a very gradual thing. For me, I would say कि I always knew that I cannot be in a cubicle sort of life, very mundane life, right? Even though I was being pushed there कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, इसके बाद ये कर लो. But I always knew कि that will not work out for me ever because I'd just be very unhappy. Even when I was in school, I would start doing like theater. Okay. I would do small roles. Being on stage just gets me up. ठीक है, मैं खुश हो जाता हूँ when I'm on stage. Performing is just great for me, right? So I always knew that ठीक है, this is something that gives me really nice happiness. And then when I was working, तो ठीक है, अब adjacent field ये writing, ठीक है, it's not like being on stage or whatever, but it's not engineering and it's writing. It's something that I was decently good at, and I had fun doing it क्योंकि you write something and then it becomes something. I really, that's the process of creation that I really like and I strive towards, because पहले कुछ भी नहीं था and then you wrote something and then you shot it and then you edited and now it's running in the world. I cannot explain to you how much I admire that process. Bringing something into existence, वो बहुत अच्छा है, and that's mostly it क्योंकि that was the thing, bro. I used to work a lot on things that did not matter as much in my life now. मैं engineering कर रहा हूँ, but it was always presenting or being on camera or creating in some sort of a creating is what I want to go for, the word that I want to use, because it is creation. It is, you're bringing something to life जो कि पहले नहीं था. So that's what I will say, and that was the point. Switched from writing to acting and directing, and then there, right. Okay. तो was there any project जो like fuck up हो गया हो कभी? ऐसी सिचुएशन आई? प्रोजेक्ट फक अप हो गया हो? हाँ, जिसमें मतलब क्लाइंट के सामने से हाथ जोड़ दे कि हो गया गलत, सॉरी. नहीं, आज तक तो टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वी कम क्लोज, नॉट गोना लाई. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट प्रोजेक्ट, बट क्या होता है ना, एक दो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक द वन वे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे वेयर सम फैक्टर्स आर सो मच आउट ऑफ योर कंट्रोल दैट तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, राइट? वेयर यू आर समवेयर एंड समवन इज शूटिंग समथिंग एंड यू कैन नॉट बी लाइक यूर कवरिंग एन इवेंट, ठीक है, टू ब्रिंग दैट एग्जाम्पल, एंड तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुमने ऑलरेडी समझा दिया है, बट इफ दैट गाय फक्स अप देन योर इवेंट इज फक्ड अप, राइट? तो फॉर मी कभी कभी हो जाता है, बट देन ऑल्सो लाइक आई फील with project management and everything, because I've worked on quite a few projects and I've managed quite a few of them. What happens is I fucked up a lot starting में, where थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती थी, फिर कुछ चीज़ डिले हो गई या something, but what works best is exact systems. I'm a huge believer in like कि तुम्हारे सिस्टम अगर सही है तो तुम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे, ठीक है? यू विल हैव लाइक कुछ, क्योंकि क्या होता है अभी जैसे जो शूट जो हुआ था, जो कुत्ते वाला शूट हुआ था, राइट? वी हैड शॉट विद अ लॉट ऑफ डॉग्स एंड इट वाज अ डॉग फूड ब्रांड. Dogs are erratic. You should not shoot with them, right? You most of the times you can't control them, and especially when we were
shooting with untrained dogs. So a lot of time gets wasted, right? So you have to move around it. You have to build a system where ठीक है जब तक ये सही से नहीं act कर रहा है, someone is looking after him, we shoot something else, right? So that's how I would say, like, I generally don't fuck up. Hasn't happened that much yet. Even if we do थोड़ा बहुत चीज़ें जैसे उस बंदे का we didn't shoot that well, right? What we did was some other person was shooting there. जो उन्होंने पूरा camcorder से we're gonna take that footage and make it into something. So just have to keep coming up with things where even if someone fucks up or someone from your team fucks up or even you fuck up, it can be made into something better and you figure it out. Because life, I never go where you fuck भाई खत्म हो गया अब तो इसका है कुछ नहीं मतलब okay what's the next step, well, how are you gonna figure it out, that's what I go for. अदर देन एड्स, ठीक है, एक और ट्रेंड था जो पूरी मीडिया एजेंसी मीडिया साइड में चला था कि स्टार्टिंग में, लाइक पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले बना सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसीज, ठीक है, देन केम SMMA, द एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, एंड देन केम पर्सनल ब्रांडिंग with Gary Vee, Alex Hormozi, all promoting personal branding. You also have a personal brand of yours. Yeah. Okay. So first of all, personal branding, like when did you think कि भाई मुझे अपना personal brand बनाना चाहिए, या फिर पहले से ही था? I tried doing it in like my fair capacity. ठीक है, जितना मेरे पास Nokia 8.1 था उस समय I was like ठीक है भाई इसमें क्या शूट कर सकते हैं in college years. I was like ठीक है I'll do something with whatever I have. So I tried and failed a lot of things. I was I remember my first piece of content like when I was in Bangalore was like pickup करता था मैं, right? करता नहीं था, I would give like a lot of cold approach tips. If you're approaching a girl, how are you gonna? Yeah, I have done like most absolute horrendous shit. वो मेरा content था उस समय, ठीक है? And I would do something like that. I would do a podcast. ठीक है. What was the reaction of the audience on that? It's pretty good, not gonna lie, bro. Like first video popped off काफी अच्छे से. Yeah. Then fucking deleted that because वो ना, I don't think it was very true to me. Right, I was doing it, I was good at it, but it was a lot of mehnat because it was a lot of in-field footage where I would go or a friend of mine would go, hi, hello, what's your name, वगैरह वगैरह. तो someone has to capture it. बहुत invasive लगने लगा मुझे. I was like, fuck that shit. बहुत मेहनत है इसमें. I'm just not going to get it done. Okay. But so yeah, the personal brand thing was always, I wanted to put myself out there always. कि मुझे अपने आप को broadcast करना है, right? Where I feel a lot of my thoughts can be refined and put in a better way, and then they can help people out, right? And that's what people tell me, like it has helped them out. So I keep doing that in that way, where whatever my capacity is, जितना ही मेरे पास चीजें हैं, I just keep putting things out that I like to talk about. Because even if you look at my content right now, it's all about ki, how do you improve yourself? Yeah. How do you get things done? Speaking to your 18 years old self. Basically that. Yeah. Like if my content has to be summed up, it's just that. It's just me trying to talk to my younger self and telling him, okay, this is how you do it. This is how you go about it. You don't have to do this. You can just do this. That's all. Share some tips, no? Like पर्सनल ब्रांडिंग में अगर कोई ग्रो करना चाह रहा है, यू हैव ग्रोन योर पेज टू ऑलमोस्ट नाउ 10K, ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है. सो शेयर सम टिप्स, इनसाइट्स, कुछ जैसे ट्रेंड्स यू मस्ट हैव गॉट टू नो ड्यूरिंग योर होल कंटेंट क्रिएशन जर्नी. I'm not an expert at it at any by any means, but what I will tell people is there is a way that you can grow really fast. So you are saying कि if you are not an expert, still you can get to 10K followers. Yeah, bro, a lot of people can. A lot of people have. ठीक है, there is a definite short way. तुम्हारा ठीक ठाक तुम्हारे पास वो क्या बोलते हैं production quality है, right? And you are decently good at speaking. And if you just copy the things that have already worked, ठीक है, it just does well. Because ठीक है, it's a winning thing. It's the same as ads, bro. It's like तुम्हारे पास एक winning script है, तुम्हारे पास एक winning hook है. Why the fuck would you not use it again and again? Right? So if it's a winning script, and you'll see a lot of people ki everything is just becoming a copy for copy, right? But for some reason I still want to make my own original things. Ki I don't want to make a copy of a copy. That's what. Because if you're starting out and you want to do content like this, find people in your niche unka content copy kar lo. I'm pretty sure you'll get to a decent, at least you'll get good at creating content. But
ओरिजिनल थोड़ा But फिर सीन है. you won't have that character development, no? Authenticity भी नहीं रहेगी. क्रिएटिव साइड अनलॉक ही नहीं होगी. I guess yeah, that's what, because I would like to say कि मैं अपनी scripts खुद से ही लिखता हूँ, right, properly, like from scratch. Like I like an idea, read about it somewhere, और फिर मैं उसके ऊपर I build on it, right. But that's how it is, right, क्योंकि तुम, it's a very iffy subject, bro. Like because people who do it, they stand by it. And ठीक है, I stand by it for them कि तुम्हें करना है, go for it. But for me, I want to put out more original content, and that just takes time. There is a book on it. I think the name is Steal like an Artist. Yeah. So So is like कि तुम multiple sources से लो, ठीक है, and just frame it in such a way where you make it your own and then you say it and you present your work. It's great when you're starting out, genuinely, कि you are starting out और तुम्हें पता नहीं है कि what are the beats of it. The first you script, then तुम उसको रिकॉर्ड करते हो, then तुम उसको एडिट टेबल पे ले जाते हो, ठीक है. तो टू मेक दैट प्रोसेस इजियर, यू जस्ट, इसको तुमने आसान कर दिया, तुम्हें स्क्रिप्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास विनिंग स्क्रिप्ट है, तुम प्ले करो, शूट करो, एडिट करो, एंड देन गो फ्रॉम देयर, राइट. That's how you take it. That's your way. I'm not saying I might never do it, ठीक है, but I'm not doing it right now. It's all original. be original, be authentic. It's a very iffy subject, bro, generally, because it's a very subjective thing, originality, because it's true that nothing ever comes out of a void. Everything will be a copy of something, ठीक है. तुम कहीं से कुछ inspiration लेके बनाओगे, but even when we are doing films, right, even when we are doing ad films, so there is a style, like I want to frame this like Fincher, I want to make it like Wes Anderson, ठीक है, मुझे इसकी तरह, इस डायरेक्टर की तरह बनाना है, या फिर ये एड मुझे इस तरीके से करना है, इसमें ये मूवमेंट डालना है, मैंने ये इस एड में देखा था. Everything is like inspired from somewhere, but yeah, blatant copying I don't fuck with. Genuinely. No one will like people, commenting कि you have copied your content. Yeah. A copycat is a very ईगो पे लगती हो बात. Obviously. कोई गाली दे दो यार, कॉपीकैट मत बोलो. True भाई, true. But ठीक है भाई, like I have a very diplomatic stance on these, because ठीक है भाई, if you want to go for it, go for it. If people have copied a lot of my scripts, great. And I genuinely believe people tend to follow people more who are authentic. भाई मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ. Yeah, very raw sort of presentation of yourself is what I also believe in, कि तुम just, I don't want an act to be presented to me, ठीक है, कि this is your man, तुम कैमरे पे आके गुस्से से बोलते हो कोई चीज़ें, ठीक है, in real you are like this, ठीक है भाई, मतलब ठीक है, you're doing an act, ठीक है, like I am not sure if everybody sees through it, but most people do see through it, and if that is working for them, then great, because you'll see a lot of these people where they come on the camera, they're just angry. Okay. I'll show you this YouTube channel. There are two people who from Pakistan. ठीक है, वासे एंड इफी. I think I've seen some clips. They were just saying shit bro. about मतलब उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी चेक करना, कुछ वो नहीं. छत पे बैठे रहते हैं वो लोग. छत में कुर्सियां लगा देते हैं. Yeah. एंड कैमरा आई थिंक दे स्ट्रीम फ्रॉम देयर मोबाइल फोन. लाइक इफी का फोन ले लेते हैं, वासे वॉचेस द स्ट्रीम ऑन हिज फोन. After the India versus Pak match, their watching was like 80K live, and the video, like 2 days old, it has 1.2 million views. Insane. Crazy. Quality है नहीं, but people follow them, people watch them because they are putting out the genuine, the authentic self. It's about character. It's about what character are you playing. It's genuinely always comes down to, be it business, be it meeting women, be it content creation, it just comes down to what sort of character are you playing. ठीक है, and if people like the character, then you're good to go. Those two are crazy. Cause those two are. Yeah, Vase and Ifi defied all the laws of production. There's a Delta 4 theory. I don't know where it was. I think that's the name of it. Where something is truly like कि भाई मतलब ये फट जाएगा. Be it product, be it a content piece, where 10 out of 8 people will share it. अगर एक product है टूथपेस्ट, ठीक है, and people share it with the other person, कि भाई इसके बारे में बताएंगे, भाई ये देखो मजा आ गई, then it has great chances of just spreading. Word to mouth is the most important thing. जैसे तुमने मुझे इसके बारे में बताया, I had no fucking idea, right? तो क्योंकि chance है bro spread करने का. Yeah, that's the thing. That's how you go viral. Yeah, you're chasing virality. I think according to the recent algorithm changes, sharing has the most
weightage for the video to go viral. On Instagram. Yeah, sharing and save, I guess. Yeah, see, that's like वो बहुत Instagram का algorithm पे depend करता है, but in just general as a content piece, तो अगर तुम्हें कुछ बनाना है, तो I would just say कि make something that someone can share, like memes. Why do they work? Because मैं जो अपने दोस्त को भेजूंगा, क्या मस्त हंसेगा वो. That's Yeah. what he will relate to this, right? And I try to do that in my corner where I try to put out something where someone might share with their friend who is on the same journey or whatever. राइट. तो जस्ट कम्स डाउन टू दैट कि क्योंकि तुम देखोगे कि कंटेंट बहुत डिफरेंट परफॉर्म करता है ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब. तुम यूट्यूब पे सेम शॉट डालो, मे बी इतना नहीं चलेगा. तुम सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे डालो, अगर शेयरेबल तो ज़्यादा चल जाएगा. यूट्यूब ने उतना पुश नहीं किया. तो लॉट ऑफ वेरिएबल्स एट प्ले, बट a genuine presence if you want to make online, like as someone who is on the path to do that, you just have to make something that is very shareable. ठीक है. You have to make something that is अच्छे से शेयर करो, लोग उसको शेयर कर सकते हैं, and they can derive value from it. That's what. तो भाई if someone was starting out, right, like कि उसको नहीं पता about any of the algorithms और platforms पे क्या चल रहा है, what do you think he should look for? So मैं एक बहुत जनरल वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है, जो लोग बोलते रहते हैं. ठीक है, यू कैन ऑल्सो बैक मी अप ऑन सम थिंग्स. ठीक है, कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो यू कैन करेक्ट मी. बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, एल्गोरिथम काइंड ऑफ एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की तरह मान लो. ओके, ईच लाइक इज 1 credit, ईच कमेंट इज 2 credit, शेयर इज 3 credit and save is 4 credit. The more credits you get per post or per reel, the chances gets higher of virality. So define virality. Viral, there is this thing called engagement ratio, ER. ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे engagement ratio करके एक टर्म होती है. It is a percentage, like अगर आपकी 10,000 फॉलोइंग है and you are getting 10% engagement ratio, or like 1,000 people are engaging on your post, likes आ रहे हैं, comments आ रहे हैं. So that's a standard baseline. 10-20% is a very good engagement ratio. But if it hits 50% चला जाता है, कभी कभी 100% से ऊपर निकल जाता है, like 10,000 followers का अकाउंट है but views millions में आ गए, right, तो that is considered as viral. Okay, that is viral. And अगेन द जो क्रेडिट सिस्टम है, जितने भी क्रेडिट आपको पर पोस्ट मिलते रहेंगे वो वायरल होने के चांसेस बढ़ाता रहेगा. द मोर क्रेडिट द रील हैज, द पोस्ट हैज, इंस्टाग्राम ज़्यादा लोगों को दिखाता है वो, बिकॉज क्रेडिबिलिटी बढ़ गई ना, ज़्यादा लोग आर engaging. It's a winning piece of content. Winning piece of content. Yeah. And now अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है and there is engagement ratio attached to it. यहाँ पे फेक फॉलोअर्स वाली दिक्कत आ जाती है कि अगर किसी ने फेक फॉलोअर्स दिलवाए हैं तो वो एंगेज तो करेंगे नहीं, तो द ER विल गेट ड्रॉप्ड. राइट. और जैसे ही ER जो है वो 5% से जो ड्रॉप होता है तो और पुश नहीं होता, वो वायरल, उसकी वायरल होने के चांसेस कम होते रहते हैं. अल्टीमेटली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ultimately what is happening is कि the app just wants people to spend more time on it, and it just wants to show you winning pieces of content. That's how it works, right? But Instagram वो चीज़ें दिखाएगा ना जो Instagram के एल्गोरिदम के हिसाब से उनको लगता है कि वे क्रेडिबल है. बिकॉज यहाँ पे पता क्या गलत चीज़ भी क्या हो जाती है, बहुत इररेलेवेंट कंटेंट वायरल हो जाता है. ठीक है, थंबनेल्स कुछ और होते हैं, रील किसी और बारे में होती है, बट वो वायरल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पीपल आर क्लिकिंग ऑन द वीडियो, इट इज गेटिंग द व्यूज, इट इज गेटिंग द लाइक्स, इट इज गेटिंग द कमेंट्स, इट इज गेटिंग द शेयर्स. I want to like restart somehow my Instagram, मतलब my personal account is algorithm, because I'm just getting memes. ठीक है, it's fine, great, amazing. I was getting like breastfeeding videos. अभी बीच में रिसेंटली हर किसी की फीड में मर्डर वीडियोस आने शुरू हो गई थी. हाँ, लाइक गन फाइट्स एंड ऑल, प्रॉपर. किसी ने मार दिया, या वो मर गया, मतलब एंड उनके ऊपर कोई फिल्टर भी नहीं था. नो नथिंग, दिस इज सेंसिटिव कंटेंट. सेंसिटिव कंटेंट का कोई फिल्टर ही, डायरेक्ट ऑन फीड. अब सेम भाई, व्हिच ऐप डू यू स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन, लाइक तुम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो? आई वाज यूजिंग इंस्टाग्राम लाइक फॉर 4 to 5 hours a day. ठीक है, but then I switched to LinkedIn and YouTube. Like I divided my Instagram hours to LinkedIn and YouTube. So what do you consume on LinkedIn? Anything. I just see the trends.
ट्रेंड शिफ्ट क्या हो रहा है लिंक्डइन पे. सो फॉर्चुनेटली आई हैव सीन द ट्रेंड शिफ्टिंग फ्रॉम पोस्ट. लाइक पहले तो क्या होता है, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने होते थे. देन पीपल स्विच टू uploading photos also, relevant photos, their professional pictures and all, and now they are switching to videos. And videos का भी एक proper format है, podcast style videos. Right. Like we are doing a podcast, so I'll just clip your face, Right. put some captions.ai, ठीक है, and upload. So LinkedIn पे इतना कंपटीशन भी नहीं है. वीडियो अपलोड किया, यू गेट impressions, good impressions. वायरल होना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है LinkedIn पे. But what is the sort of gentry or crowd that you find in LinkedIn? On LinkedIn is too sophisticated, too professional, and I guess too fake. Tell me about it. Like I don't. भाई 4 मिनट हुए, 8 चीजों डिस मार दिया, बताओ नेक्स्ट क्या हो रहा है. LinkedIn. So I won't name the person, but IRL मुझे वो, मतलब I know a person in real life. वो LinkedIn पे जैसे बिहेव करता है, वो वैसा रियल लाइफ में है ही नहीं. It's the character. Yeah, I've seen his comments, I've seen his post, everything. Startup, investment, client side management, company कैसे चलानी है, ये सब I have A to Z मैंने उसको स्टॉक मारा है. एंड फिर मैं उससे रियल लाइफ में मिला हूँ. मैं मान ही नहीं सकता कि ये वो बंदा जो लिंक्डइन चलाता है. या तो he has given his account to an agency जो उसका कंटेंट देख रही है, on his behalf they are putting the content out, but this guy has no idea कि भाई इसकी लिंक्डइन पे जो पर्सनैलिटी है वो नहीं है, या तो इसको किसी ने बताया नहीं है. I do not use any other app as of now apart from Instagram and YouTube. YouTube I watch because मेरा काम रहता है वैसे, right? And I watch a lot of educational या फिर fun content. But Instagram I use a lot. I'm trying to get it down to 15-20 minutes a day, which is happening on most days. But LinkedIn I never touched as such, क्योंकि it just feels like a very foreign concept. बहुत professional लगता है मुझे. And in that way it feels very fake, because that's why I cannot do a job, because it's a corporate thing. ठीक है, and you know how people are in corporate, right? Yeah. नहीं, like जो चीज़ बतानी है सिंपल बता दो. कॉर्पोरेट में अगर कोई CEO, CFOs वगैरह भी, उनको भी तो समझ आ जाएगी वो चीज़. Obviously. उसके लिए कोई कॉर्पोरेट जार्गन यूज करने की जरूरत क्या है? इतना प्रोफेशनल इंग्लिश वगैरह. ब्रो टच बेस कर लेते हैं इसके बाद में. ठीक है भाई, मतलब आज बात ही तो करनी है तुझे, क्या सीन है, मतलब वो टच बेस क्या होता है? टच बेस क्या होता है? यही होता है ब्रो. आज हम बात कर लेंगे इस बारे में दोबारा से. ठीक है भाई, ठीक है. मैं ETA तक मुझे समझ आता है, उसके बाद नहीं आता. यार इस पे कितना हमें रन डाउन कब दोगे तुम, ये वो. बट दैट्स व्हाट ब्रो, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ पीपल एंड स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू विल फाइंड. लाइक आई हैव फाउंड वेरी कॉर्पोरेट मी फॉर सम रीजन. ठीक है, लॉट ऑफ लाइक पैसिव अग्रेसिव पीपल, जो मतलब you're doing something just like comments पास हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, shout out to 125. लोग तो फाउंडर्स को टैग कर देते हैं कि मेरी पेमेंट निकाल लो LinkedIn पे. हाँ, कि वी हैव वर्कड फॉर दिस कंपनी, इतना हमारा बिल था, बिल का भी अमाउंट स्क्रीनशॉट भी डाल दिया. उसका फाउंडर और टीम को टैग मार दिया सबको. CEO ये है, CFO ये था, हमारा POC ये था. यार if anyone knows them, please ask them to give our money. Good way. And people are commenting for better reach. Obviously भाई, CFBR commenting for better reach ही कर दे भाई. But generally like coming to payments वाली चीज़, right? It's so fucking weird because ठीक है, corporate में there's a system process. तुम्हें 1 महीने 2 बाद कुछ लोग तभी salaries नहीं देते, right? They're fucking assholes. But कभी हुआ ऐसा, like sorry to interrupt, but in your media agency, yeah, that's what I'm gonna say. In your whole media work, कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, okay, जितना promised amount था वो अब देने से मना कर रहे हैं, कि अप्रूव हो गया बट वी डोंट लाइक द क्वालिटी, और ये भी चीज़ नहीं ब्रो, अप्रूव हो गया, यूज़ हो गया. ठीक है, एंड I'll get into specifics also because that's what I was coming to, क्योंकि especially in this freelancing industry in general, or not even media, just freelancing industry in general, just the cycle of payments is just weird. ठीक है, कोई आता है नहीं आता है and all that shit happens, and what people do to, because I have made a point in my agency that we run together, my partner and I, कि हम लोग we get our crew sorted. ठीक है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में पेमेंट्स हमारे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं. यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद अस, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क विद अस अगेन एंड अगेन, राइट? क्योंकि पता है
मैं अपनी पेमेंट्स रोक देता हूँ, हम लोग अपनी पेमेंट्स रोक देते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे कुछ भी पैसा, बट हमारे से जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा लाइट वाला बंदा है, जो हमारा डी उसका पेमेंट क्लियर होना चाहिए, राइट, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एंड देन वी सी सम पीपल, क्योंकि व्हेन आई वाज फ्रीलांसिंग, राइट, तो क्या होता है, I had this project to get into a specific thing where this guy first he tells me in March, in May, we have to shoot this video. This is this for this thing, and I won't be able to pay you now. I will pay you 6 months later. Oh wow! ठीक है? 6 months later. 6 months later, and but you have to do the work, everything. You have to direct this, you have to edit and everything, script करके मुझे सब बना के अच्छे से दो. Timeline पे चाहिए मुझे, but ये पैसा तुम्हें इतने दिन पे दे पाऊंगा. Oh, this is, and क्योंकि मेरे रेफरेंस से आया था एक, I was like ठीक है, this कि is पैसा weird. तो दे ही देगा. Yeah, and I was like, but then also I was like ठीक है, मैं थोड़ा अमाउंट ले लेता हूँ. I took some amount like 30-40%. I was like ठीक है, जब देगा तो he's like नवंबर में दूंगा मैं. बोला ठीक है भाई, देना दे देना, ठीक है. I'll trust you. Okay. Right, because you seem like an upstanding guy, you're a proper professional and all that. मैंने काम करे, डिलीवर हो गया, पोस्ट हो गया, एवरीथिंग इज डन, ठीक है, इट्स डस्टेड. Proper timeline में, there was no delay from my end. I was there, shoot days पे, recce पे, wherever you needed me, I was there. And then this guy, he's like कि भाई नवंबर में I started following up with him. He's like ठीक है, दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर के एंड में नहीं हुआ, मतलब ठीक है चलो न्यू ईयर है. जनवरी में I followed up with him, नहीं कर रहा है बंदा. This man is first picking up the call, आज हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहा है, ठीक है. I was just like, how can a person be like this? ठीक है, and this man like he is not, either give me a date. मैं नहीं कह रहा मैं तुम्हें घुस जाऊँगा तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे देते रहो. Give me a date, I'll call you on that day. नहीं तो फिर तब बात करते हैं. People like this, they कर ही नहीं रहा है bro. This guy is just not giving it to me. ठीक है, and I have a very, you would say I have a way where ठीक है, last ditch effort क्या होता है? In the end, this most freelancers relate to this. The process becomes the punishment वाली चीज़ होती है. The following up with someone for your money that you've already worked for, that you've already given, it just becomes the punishment, right? तो then you're like कि ठीक है भाई, I'm just gonna go AWOL. I just wrote a message. I'm like bro, ऐसा scene है. I'm just gonna put a story. I'm gonna give out all the timelines कि ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ. बाकी I'm gonna tag you with your company and all that. I'm just gonna post this shit. तो अपने हिसाब से देख लो. रात में पेमेंट आ गया. ठीक है. This is weird. Also one more guy, what he did. I love this. I genuinely like respect for that guy. कोई भी जानता है उसको टैग कर दिया. You know what he did? कोई यूएस का क्लाइंट उसका नहीं दे रहा था पेमेंट, तो what he did, बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहा है. You know what he did? He cataloged all the following of his client, जिन लोग को जानता है, and then he's like मैंने एक वीडियो बनाया detailing what you've done to me. I'm just gonna send it to them. तुम अपने हिसाब से देख लो तुम्हारी रेपुटेशन है क्या होता है. तुरंत पेमेंट आ गई उसकी. Such hostile way, but like that's the sort of lens that you have to go to where कि बंदा like मान ही नहीं रहा है. That's what you have to go to, right? हमारे साथ भी हुआ है ये. And we also work with people जिनसे हम पैसा नहीं लेते अपफ्रंट, कुछ भी चार्ज नहीं करते, but गुडविल है ब्रो. But we know for sure कि पेमेंट दे देगा. And वो दे भी देते हैं. Yeah. मतलब मांगो भी ना तभी भी दे देते हैं. Right. There are good people out there. Okay. For anyone who is just starting out in media agency, ठीक है, what are the red flags कि भाई ये client ऐसा बोल रहा है, so इससे तो दूर ही रहो. Clear clarifications नहीं मिल रहे हैं तुम्हें कि like what exactly do you need to do for. हाँ, कभी client करते हैं कि मुझे पसंद नहीं आया है, मजा नहीं आ रहा है. Yeah, that is bullshit. I am not a mind reader. ठीक है, that's what I like in a more professional way कि I do not understand that. What do you mean by मजा नहीं आ रहा है? Do you want me to change the music? Do you want me to change the pacing? Do you want me to change the edit style? What do you want? Right? What the fuck does मजा नहीं आ रहा है mean? क्लिप मार दियो भाई इसकी काट के. मजा नहीं आ रहा भाई क्या होता है? Genuinely भाई, because like I have personally faced it like once or twice, but then I just tell them कि भाई see, I am not a mind reader. I don't know what your taste is. Also coming back to my point of systems. अगर मैं कोई फिल्म डिलीवर करवा रहा हूँ या हमारी कंपनी से जा रही है, राइट, वी गिव देम एग्जैक्टली, पहले ही बनने से पहले ही हम दे देते हैं भाई तेरा ये लगने वाला है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा. लाइक इट विल नॉट बी लेस देन दिस, इट मे बी बेटर देन दिस, बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. आई विल गिव यू शॉर्ट रेफरेंसेस. दिस इज व्हाट द सिस्टम इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें ऐसा दिखने वाला है. That's why references are very important, because also what happens with especially video production is
एक बंदा है 5,000 रुपये मेरे पास, भाई मुझे ऐसे नोलन लेवल का ऐड बना दो। अरे नहीं, रेफरेंस से एक बात याद आई, मेरे पे क्लाइंट आया, दे वांटेड टू लाइक दे वांटेड मी टू मेक देयर कंपनी प्रोफाइल, ओके। उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजे एंड देन मैंने रेफरेंस का, अगर मैं आपको कोई रेफरेंस भेज रहा हूँ, आप उसकी जैसे ही बनाओगे ना कुछ चीज़, मैंने उसकी तरह बना के भेज दी। उसके बाद कॉन्वर्सेशन कहाँ पे अभी चल रही है कि मैंने जो रेफरेंस भेजा था ना वो तो रिजेक्टेड था। मतलब मेरे लिए रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा नहीं बनाना, या मतलब अजूबे आदमी ये सब ऐसे टेक्स्ट पढ़ता है, बोलता फोन फेंक देता है। मतलब चमत्कारी लोग। Just weird, but that's why clear communication बहुत important है, because especially with clients, like, कर दो अपने हिसाब से, फिर तुम कर दो अपने हिसाब से, ये कभी नहीं नहीं करना चाहिए। Give clear cut references of what you're gonna do, what they will get, ठीक है, वो बहुत important होता है, because especially in films we give out a pre-production deck, right, कि हम ये करने वाले हैं, ये स्क्रिप्ट है, शॉर्ट्स ऐसे होने वाले हैं, and that just saves a lot of time in post, और back and forth नहीं होता, because they know what they were gonna get and that's what they've got. Obviously there are people कि अरे ये क्या बना दिया, समझ में नहीं आया, बहुत कम होता है आपको हमारे साथ, because that's what we learned by doing something and failing at it. हमने वो कोई चीज़ करी and then we realized, oh, this is where the process is fucking up, then we fixed it. That's what. एडिट्स कराते रहो, Edits कराओ, but give clear concrete feedback, ठीक है, feedback that I can work upon. What the fuck is मज़ा नहीं आ रहा है? ये तो वो बात हो गई कि एक वो है छोटी सी शायरी, बोलेंगे क्या बोलेंगे, कि हम आपके लायक बंदे रहे, आपने शर्तें बदल दी। नाइस भाई, लखनऊ से हो तुम? सो या कंटिन्यू ऑन दैट। और कोई रेड फ्लैग्स होते हैं क्लाइंट्स के लिए? क्लाइंट्स के लिए नहीं, मीडिया एजेंसीज के लिए। मीडिया एजेंसीज ने क्लाइंट को लेके, ये मोस्टली दैट कि किसी पर क्लियर कट फीडबैक नहीं है, दे आर डिलेइंग पेमेंट्स अननेसेसरीली, ओके, ठीक है, एंड मल्टीपल टाइम्स दे आर डूइंग दैट। तुम फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ रिटेनर में हो, तो अगर मल्टीपल टाइम्स हमारे साथ डिले हो रहे हैं और कभी कभी लाइक एक महीने का क्रॉस ओवर हो जा रहा है एंड स्टिल नॉट डूइंग इट, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। यू शुड गेट आउट ऑफ देयर एसएप, एंड इफ दे आर जस्ट वेरी पुशी विद यू, ठीक है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, दैट्स ठीक है, कहीं पे टाइमलाइंस कम होते हैं, बट जस्ट वेरी अपनी they're not letting you speak even for a moment, where they're कि बस जो बोल रहे हो करो, right? And sometimes ठीक है भाई, मतलब that's what you want, right? But most of the time it just comes from a fact of like they think they know better, ठीक है, they might know what they want for their brand, but the craft is still the craft, right? I can tell you कि what we can do that aligns with your vision. That's why again the system is there, because तुम पहले से ही बता दो this is how we can align. Nothing, I feel, especially in when people's money and time is involved, nothing should be done ad hoc. Especially on my shoots, what I make a statement about is कि we are not doing anything when we go on set except to shoot. हम वहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे अब करना क्या है. We know exactly what we're gonna do. We just go there and shoot. That's how you respect people's time and money, and especially this is to production people as well, because that's how you have to being just like कि ठीक है, कभी कभी एक दो शॉट्स हमने क्रिएटिवली ले लिए, whatever, but you have to know exactly what you're gonna shoot. You have to know exactly how it's gonna look later, right? तो वो बहुत important है. Those are the major red flags I would say. Yeah, okay. So what should a company look out for in an agency, like while they are hiring them? For the media needs and stuff. Yeah, right? media needs. Media needs, digital needs. I think as a person who runs his own social media sort of agency, and I help people with personal branding, what you have to look out for when you're hiring someone or working with someone is, first, their processes are not all over the place. Their systems are good, where there is a set process already. They're not figuring it out along the way. Same thing I would say to the agencies, right? कि मतलब तुम्हारे processes already set होने चाहिए, and it shouldn't be all over the place. You should know कि okay, this is our client onboarding system. This is the first questionnaire that we send them. This is what we do with the questionnaire. This is then उनको script भेजेंगे. Explaining the client side also. Exactly. And then from the client side, it's just कि they are treating you well in a way where it's a collaboration. That's the word I would want to go for. It's a collaboration. It's not a you're paying them to do this. It's like you both have to grow together. That's the sort of mindset also that I take when I'm
doing work with my clients. I'm doing my thing. ठीक है, मैं अपना कर रहा हूँ. ठीक है, you're on the same boat as me. So we have to grow together, हाँ right? So whatever I am doing, whatever things I am improving, it will never be a set thing for you that I am giving. इतना package मिल रहा है तुम्हें. I will go above and beyond for you. Agencies that go above and beyond for your clients, great. ठीक है. Agencies that just are not, how do I put this? Are not non-collaborative. That's what you want to go with. कि मतलब एक तरफा मोहब्बत नहीं करनी. हाँ कि like भाई you have to trust them that they know their craft, but also they never shut you out कि this is what you want. नहीं आपको निश्चित यही करना है, ये नहीं होना चाहिए, right? They know their craft, but you are the person who has to ultimately build the brand. So you have to be very first. Also, when you are a client, you have to be very confident in your own things कि you know where you're headed. That is also a thing. So in choosing the right agency, first you have to know yourself, and then you have to pick the agency or the person that you're going to work with, the freelancer. Timeline meet करें और तुम्हारे systems अच्छे हों, create agency. It's mostly good, and then pay them well, of course.